आवाज कम आ रही है। Is it clear now? Yes, sir. Yes, sir. I was just trying to do one experiment today. Can we go with what music at a background and printing? But again, I need to work out properly, and in the upcoming lectures, I'll definitely work out on this particular practice. Okay, let's start with this. Today we have to focus on deadlock handling. So this is one of the very important topic where we need to take the review of last session. In last session, we have seen what is deadlock. So I'll again cover what is the problem with starvation, why handling of deadlock is so important that we'll focus on deadlock handling. Then we'll see there are certain methods of handling deadlock. One of the method is deadlock prevention. Then there will be possibility that if there is deadlock after so much of prevention, we need to focus even on how we can able to detect the deadlock. Once it is done, then we'll focus on once deadlock is detected into next session, we'll focus how we can able to recover from the deadlock. So let's look at on the part that we were actually discussing yesterday. We have seen two-phase locking protocol, and this particular part is coming in between two-phase locking protocol. It is not a part of two-phase locking protocol, but we need to understand what is the problem with two-phase locking protocol, okay, where the issue of deadlock is there, okay, and it's so two-phase locking protocol does not ensure freedom from deadlock. So we need to work out on what deadlock. What is deadlock and what is starvation? So deadlock, I have already told you. If there are two transactions working simultaneously and if they are waiting for each other, if there is circular wait, okay, that kind of thing, that kind of situation where nothing can happen, nothing go ahead, that means that it is deadlock. There is one more topic, that is starvation. There may be possibility when normally there is deadlock, normally there will be possibility of what? Starvation. When we take care of deadlock, normally starvation is coming. So what we need to do in this case when starvation is coming, or rather what is exactly starvation, so that you need to understand. So starvation is that I have yesterday I have already told you, and I have given one of the example of what traditional example of breach. In breach, there is one vehicle which is coming and another vehicle is coming. No one can go ahead. Either this vehicle cannot go ahead, and rather this vehicle can also go ahead. Such situation is known as deadlock. Now what is happening here? Suppose anyone, either this one or this one, has to take their car at reverse direction. Their vehicle should be taken reverse direction. Okay, and then the other end will what start. So what is happening? Suppose this end has taken what reverse. This vehicle has taken the reverse. Okay, and this vehicle is moving further. Now the second one is also moving. Third one is also moving, and this particular vehicle is not getting any chance. So this particular vehicle is starved. Such a situation is known as starvation. So we need to take care of deadlock as well as starvation. So this I have already cleared you regarding what exactly is the scenario where we can think about what both the locks like X lock and S lock. So though though the transaction have locked their transactions, there may be possibility of what deadlock. So though we are using two-phase locking protocol, which normally ensures serializability, but it does not give you guarantee of freedom from deadlock. Now the next part, that is deadlock handling. This is our aim today. We need to cover deadlock handling today. And dear students, this is one of the important question. This is one of the important topic that is normally there into operating system as well. So in second semester, there will be this topic will be again as it is will be repeated. Okay, so deadlock handling is really important, and questions on university as well as gate examination, you can see there are various questions based on deadlock. So let's focus on deadlock handling. System is deadlocked if there is a set of transaction, okay, and every transaction in the set is waiting for another, rather each other. So they are waiting for what? Each other. Such a situation is known as deadlock. So we had
great discussion on what deadlock. Okay, so this diagram I have already told you. Okay, if there is like this kind of situation which will be there where no one can able to go ahead, such a situation is known as what deadlock. So we need to handle such a situation so that this traffic will what continue. So let's look at on the discussion that we need to do. So deadlock, there will be what deadlock prevention protocol that will ensure that the system will never enter into deadlock state. So we need to focus here on certain protocols. Okay, these are the protocols of preventing from what deadlock. So we need to focus on this protocols. What are the protocols which are there by which it will give us guarantee that deadlock will never occur. Okay, so it will give you guarantee of preventions. So what are the prevention strategies? So pre-declaration of transaction locks, we need to declare the transaction locks. The pre-declaration is important. Then we need to lock data items only in the order specified by partial order. Okay, so hope you remember POSET, that is for partial order set in discrete mathematics. That is the actually concern here. You need to understand data items will be locked in order, okay, of partial order. So the way they are actually demanded, the locking will what perform. So more deadlock prevention strategies, you can observe the schemes. There are basically three schemes: wet die scheme, okay, timeout based scheme, and another one is wound wait scheme. So here wet die scheme is non-preemptive, whereas wound wait scheme is preemptive. Now you need to understand the meaning of preemptive and non-preemptive. Non-preemptive means what? Suppose somebody is entered into my cabin and discussing with me. Though high priority instruction is coming, certain faculties are coming, that faculty will wait till the student which is inside will go out. That is known as non-preemptive. So that student will never get any interrupt. That student will be seated in front of me. He or she will complete formalities, and later on, that student will go out, and there may be possibility that then faculty can enter. This is known as non-preemptive. Preemptive means what? Suppose me and any of the student is discussing and some of the faculty members are waiting outside. They may come in between and interrupt our conversation. Okay, they will discuss, or that particular faculty will discuss with me. I'll resolve their issue, and then that particular faculty will go out. It means that that student and me is preempted in between. That student is preempted. That student has to what? Wait in between. That situation is known as preemptive. I hope you understood non-preemptive and preemptive. Preemptive means very, very simple. When you are discussing with me, okay, and no one is coming inside, high priority is given to you. That means it is non-preemptive. Preemptive means what? You are seated, but somebody is entering, maybe high priority than you. In that case, it is happening. Such type of happening is known as you are getting preemption, and that is the reason it is known as preemptive scheme or preemptive algorithm. Again, we need these kind of concepts into what? Operating system. So we'll see that concept in detail. Here you need to understand if there is any sort of question to you, like what is the difference between wet die scheme and wound wait scheme, you will get one of the difference, that is preemptive and non-preemptive. Okay, so let's focus on wet die scheme. According to name suggest, wet die means it will wait for a particular time quantum that is set. जो भी टाइम क्वांटम आप लोगों ने सेट किया होगा वहां तक वो वेट करेगा. उसे यदि वो नहीं मिला तो वो क्या हो जाएगा, वो पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन जो भी हो क्या हो जाएगा, डाई होगा यानी क्या, रोल बैक होगा. इट विल बी रोल बैक. So you need to understand here, older transaction may wait for younger transaction, okay, and they can, they can till the younger one release the data item. So जो transaction execution में है वो जब तक उसका data item को अनलॉक नहीं करेगा या उसका डेटा आइटम को रिलीज नहीं करेगा, उसके लॉक को रिलीज नहीं करेगा, तब तक जो ट्रांजेक्शंस अभी बाद में जो आए हुए हैं दैट विल बी इन व्हाट वेटिंग. ओके, और ये वेटिंग कब तक करेंगे? फॉर अ पर्टिकुलर टाइम क्वांटम. उस पर्टिकुलर टाइम क्वांटम तक, यानी क्या, ऐसे समझ के चलिए फिलहाल कि 5 मिनट्स हम लोगों ने दिया हुआ है. 5 मिनट्स तक यदि उसको वो लॉक ग्रांट नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली डाई हो जाएगी, वो वाली ट्रांजेक्शन डाई हो जाएगी, यानी उसको क्या किया जाएगा, रोल बैक किया जाएगा. तो इसी का मीनिंग क्या है, आप फिर से फोकस करें मेरे फोटोग्राफ के ऊपर, मेरे कैमरे के ऊपर. देखिए एक व्हीकल आ रहा है, दूसरा व्हीकल आ रहा है. ओके, ये एक दूसरे के लिए वेट कर रहे हैं. ओके, इसका टाइम लिमिट हम लोगों ने 5 मिनट सेट किया हुआ है, इसका टाइम लिमिट 7 मिनट हम लोगों ने सेट किया हुआ है. जैसे इसका 5 मिनट कंप्लीट होगा, क्योंकि इसको रिसोर्सेज तो मिलने वाले नहीं है,
इसका जैसे ही 5 मिनट्स कंप्लीट होगा ये यहाँ से रोल बैक कर लेगा, मीन्स ये रिवर्स चला जाएगा और ये कार यहाँ से निकल जाएगा। तो दोस्तों इससे आप लोगों को ये समझ में आएगा कि इससे डेडलॉक का प्रॉब्लम जो भी है, वेट डाई स्कीम, ओके, दैट विल रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डेडलॉक। बट व्हाट विल हैपन, अब देखिए क्या हो रहा है, सिनारियो, सेकंड सिनारियो, डेडलॉक विल बी एश्योर्ड कि डेडलॉक यहाँ पर नहीं आएगा, ओके, बट देयर इज प्रॉब्लम विथ व्हाट, स्टारवेशन। कैसे? तो देखिए ये 5 मिनट्स वाला जो था ये बाहर आ गया, ये वाला चला गया, ओके, फिर से 5 मिनट के बाद ये वाला अंदर आया, फिर से यहाँ पर कोई तो भी आया हुआ है, ये जो भी है फिर से, ओके, ये 6 या 7 मिनट्स वाला या 8 मिनट्स वाला है, फिर से ये डाई होगा, फिर से ये वाला कार चला जाएगा। तो ऐसे बार बार ये डाई होते जाएगा, ये डाई होते जाएगा, यानी रोल बैक होते जाएगा, रोल बैक होते जाएगा, बार बार यही यदि रोल बैक हो रहा है, सेम व्हीकल यदि रोल बैक हो रहा है, सेम ट्रांजेक्शन यदि रोल बैक हो रहा है, दैट इंडिकेट्स कि वो वाला ट्रांजेक्शन या वो वाला जो भी पर्टिकुलर व्हीकल है वो क्या हो चुका है, स्टाव हो चुका है, एंड सच सिनेरियो इज नोन एज स्टारवेशन। सो दैट मे हैपन इन केस ऑफ वेट डाई स्कीम। नेक्स्ट इज टाइम आउट बेस्ड स्कीम। टाइम आउट बेस्ड स्कीम मींस व्हाट, अगेन इट विल बी बेस्ड ऑन टाइम, ओके, ये क्या करेगा, वेट करते करते डाई होगा, ये क्या होगा, कोई भी ट्रांजेक्शन का अपना एक टाइम लिमिट है, वो टाइम लिमिट जैसे आएगा वो फिर से वहां से क्या हो जाएगा, डाई हो जाएगा। तो यहां पर भी लगभग क्या है, दोनों स्कीम जो भी है ये लगभग क्या है, सेम है। नाउ फोकस ऑन द थर्ड वन, वाउंड वेट स्कीम। वाउंड वेट स्कीम क्या करेगा, ये यहां पर जो भी पर्टिकुलर ओल्डर ट्रांजेक्शंस है दैट विल बी वाउंडेड, दैट इज फोर्सेस टू रोल बैक ऑफ यंगर ट्रांजेक्शन इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर इट। यानी ये क्या करेगा, जो जो भी पर्टिकुलर ओल्डर ट्रांजेक्शंस है वो यंगर ट्रांजेक्शन को क्या कर देगा, रोल बैक करने के लिए बोल देगा और खुद आगे चला जाएगा। सो दैट इज व्हाट द कंसर्न, ओके। सो मे बी फीवर रोल बैक, यहाँ पे थोड़े से, यहाँ पे रोल बैक्स क्या होंगे, कम होंगे एज कंपेयर टू वेट डाई स्कीम। सो वाउंड वेट स्कीम इज बेटर देन व्हाट, वेट डाई, okay, but that depends on what application. So here we'll focus on detail what exactly is wet die scheme. So both wet die and bound wait need what, rollback. Rollback of transaction is restarted with its original timestamp. Timestamp यानी क्या, फिर से उसको एक नया टाइम स्टैम्प दिया जाएगा कि कब तक ये वेटिंग में रहेगा। जैसे मैंने 5 मिनट्स बोला था, 7 मिनट्स बोला था, नया टाइम स्टैम्प उसको क्या किया जाएगा, असाइन किया जाएगा। इट मे नॉट बी ऑलवेज सेम कि 5 मिनट्स ही रहेगा या 7 मिनट्स ही रहेगा, दैट डिपेंड्स ऑन व्हाट सिस्टम, किस तरीके से उसको प्रोग्राम किया गया है, अकॉर्डिंगली दैट टाइम स्लॉट विल बी व्हाट सेव्ड। दैट इज एक्चुअली नोन एज टाइम स्टैंपिंग। उसके ऊपर टाइम को क्या किया जाता है, स्टैम्प किया जाता है, दैट इज नोन एज व्हाट, टाइम स्टैंपिंग। Another part, older transaction thus have precedence over the newer one and starvation is hence avoided. So यहाँ पर क्या होगा, यदि older transactions जो भी है उसको क्या किया जाएगा, precedence दिया जाएगा नए transaction के ऊपर, तो automatically क्या हो जाएगा, यहाँ पे starvation will definitely what taken care. So this is what in this particular scheme with what minor modification we can even take care of what, starvation also. So this scheme will definitely take care of deadlock as well as it is taking care of starvation also with fewer modification. Next is time out based scheme. Now transaction waits for lock only for a specified amount of time. Okay, transaction will be locked for a particular time. यानी यहाँ पर क्या है, पहले वाला जो स्कीम था, इन दैट स्कीम कौन वेट कर रहा था, जिसको लॉक चाहिए है, ओके, और यहाँ पर टाइम आउट वाला स्कीम क्या है, जिसने लॉक को होल्ड करके रखा हुआ है, उसका टाइम लिमिट जैसे ही आएगा उसको रिलीज कर देना पड़ेगा, यानी उस टाइम लिमिट के अंदर ही उसको क्या करना है, उसका एग्जीक्यूशन जो है दैट शुड बी परफॉर्म। सो ट्रांजेक्शन वेट्स फॉर अ लॉक ओनली फॉर अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ टाइम, ओके। नेक्स्ट इज if the lock has not been granted within that time, the transaction is what, rolled back. तो ये नेचुरल है कि यदि आप लोगों को वहां पर उस पर्टिकुलर समय तक यदि नहीं मिला, लॉक ग्रांट नहीं मिला, तो आपको क्या करना रहेगा, ट्रांजेक्शन को रोल बैक करना रहेगा, ओके। सिंपल टू इंप्लीमेंट बट स्टारवेशन इज पॉसिबल। सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन केस ऑफ टाइम आउट एंड वेट डाई स्कीम इज ऑलमोस्ट सेम, बोथ हैव द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट, this starvation, but with wet die and bound wait, if we make this kind of arrangement, that is older transaction run has precedence on what, the new transaction, that indicates it will take care of starvation. So that's the beauty of wet die and wet bound, and hence it is very very famous and normally question asked on what, wet die and bound wait. Also difficult to determine good value of timeout interval. It's really again the challenging part. We need to have a research what should be the value of each and every transaction to die, means what, 5 minutes, 3 minutes, 2 minutes, what timestamp should be given to each and every transaction is one of the challenging part. ये तो बांटने जैसी बात हो गई कि आपको 2 मिनट दे देते हैं, आपको 4 मिनट दे देते हैं, आपको 5 मिनट देते हैं, that may not survive. Okay, we need to identify proper value and then it is possible to focus on that.
Next is deadlock detection. So this was the scheme of what deadlock prevention. Deadlock prevention में हम लोगों ने क्या देखा? There are basically three schemes. First one is wait die, timeout, and the last one is wound wait. So this particular schemes are useful to prevent deadlock, wait wound, and sorry, wait die as well as what wound wait will help you with minor modification for starvation also. Okay, timeout will give you guarantee that deadlock will never occur, but there will be what, there will be chances of starvation. So it's better that we need to recommend that two schemes than timeout. Okay, now the next topic, that is deadlock detection. We have seen deadlock prevention, now deadlock detection. Though we are preventing anything, but there may be possibility of what, deadlock. So आप कितना भी प्रिवेंशन लीजिए, उसके बावजूद भी यदि कुछ डेडलॉक आता है, we need to detect that deadlock first. How to detect deadlock? So that situation will be that situation is explained here. For that we need what, wait for graph. Okay, so deadlock described as wait for graph. It consists of vertex and edges. Again, you need knowledge of data structure, where you have already seen graph theory. Okay, where we need to vertex, that is what the vertex and edges. Okay, it is forming a graph. Okay, so let's focus on here, where G is equal to V comma E. Okay, G is set of vertices as well as edges. Okay, all the transactions in the system will be treated as V. Okay, so Ti, Tj, okay, whatever transaction which are coming T1 to Tn, all are treated as V. And if there is element which is ordered like Ti gives Tj, it means that Ti, okay, Ti, if Ti gives Tj in E, that is what edges. If such type of edge is there, it means that Ti is dependent on Tj. Okay, it means that Ti is dependent on Tj. Means Ti is waiting for Tj. Unless Tj release the data item or release the lock of that particular data item, Ti has to wait. So this shows the dependency. So जहां पे arrow है उसके ऊपर क्या रहेगा, ये वाला जो भी है depend रहेगा. Okay, so that we can able to understand through this graph theory. Another part, when Ti gives what, again Tj, it means that then the edge Ti gives Tj is inserted in the wait for graph. ये वाला जो भी इमेज, ये वाला जो भी एज है, ये क्या किया जाएगा, वेट फॉर ग्राफ में इंसर्ट किया जाएगा. ओके, एंड दिस एज विल बी रिमूव्ड ओनली इफ there is no data item which is holding that particular lock. So किस तरीके से आप लोगों को वर्टेक्स तो फिक्स आएंगे, लेकिन एजेस जो भी है ये रन टाइम के ऊपर डिसाइड होगा कि कौन कब उसका कंप्लीशन जैसे ही होगा तो एज क्या की जाएगी, रिमूव की जाएगी. वेटिंग बढ़ेगा तो एजेस क्या किए जाएंगे, ऐड किए जाएंगे. सो दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. Okay, so let's look at on this part. The system is in deadlock state. Okay, it's in deadlock state if and only if the wait for a graph has a cycle. This is what the logic. Okay, wait for a graph जब भी हम लोग ड्रॉ करेंगे, कैसे ड्रॉ करना है मैं आप लोगों को दिखाऊंगा. Once you are drawing that and if you are forming a cycle, आपको यदि कहीं पे उसमें उस ग्राफ में साइकिल नजर आया, it means that there is sure shot, there is what guarantee that deadlock is there. And that way, by observing that cycle, you can able to identify, you can able to detect the deadlock. Okay, so deadlock detection algorithm will periodically check for what, cycle. So whether cycle is there or not, it will be checked using deadlock detection. So let's focus on this diagram that will clear you. There are transactions like T17, T18, T19 and T20. Okay, there are 4 transactions. Okay, T17 is giving you what, direction to T18, T17 to T19, then T19 to T18 and T18 to T20. It means that T20 have holded a data item. Okay, and T18 is waiting for that data item. So unless T20 will release, T18 will not be executed. So here initially T20 will be executed. Once it is executed, then T18 will be executed. Once it is executed, then there will be choice of 19 or 17. But 19 will be executed because again 17 is dependent on 19 as well as 18. So 18 has released the lock, but 19 is also there. So this will be executed first and then this will be executed. So here you will understand that how this particular transactions will be executed. So here T20 will be executed first. Okay, once T20 has done, it will release all the lock, then T18 will be executed.
Once T18 is executed, then it will release all the lock, then T19 will be executed. Okay, once T19 is executed, then again it will release the lock, and finally T17 will be executed. Okay, finally T17 will be executed, and this way transactions will be executed. Now you will understand that T20 will be executed first, then T18, then T19, and then T17. This way transaction will be executed. So these transactions are executing fine. There is no cycle in between. Though you will observe that here there is cycle. Okay, you may feel that there is what cycle here, but it is not cycle, because this direction is going in this. Okay, it is also going in this direction, and this is going in this direction. साइकिल कब होता, यदि ये यहां पर जा रहा है, ओके, ये यहां पर जा रहा है, ओके, ये वाला यहां पर आ रहा है और ये वाला इधर जाएगा, तब जाके यहां पे क्या आएगी, साइकिल आएगी. तो दोस्तों, unless you get cycle, there is guarantee that there is no deadlock. So this you need to understand. Okay, so let's look at an example where the cycle is there. Okay, so wait for graph without cycle, this gives you guarantee that there is no deadlock. Now the next part, just focus here, you will understand that there is cycle. Where you are getting cycle, so focus that T19 dependent on T18, T18 dependent on T20, and T20 is also dependent on what, T19. So here you will observe that there is a cycle. Okay, you can observe here there is a cycle. यहाँ पर ये cycle आप लोगों को नजर आएगी, and this cycle indicates here this is in deadlock. Okay, it is in deadlock. I hope, dear students, you will understand this, because here you can see that this arrow is moving here, it is moving here, okay, and it is moving here. It means that it is ultimately forming a cycle. It is ultimately forming a cycle. तो ये ऐसे ही घूमते रह जाएगा हमेशा के लिए. Okay, unless we need to release some lock. Such a situation is known as deadlock. Okay, such a situation is known as what, deadlock. तो यहाँ पे जो भी साइकिल आया ना, इस साइकिल की वजह से ये क्या हो रहा है, यहाँ पे deadlock आया है. This is for sure, and this way we can able to identify deadlock using wait for graph. Wait for cycle. I hope it is very very simple. Simply क्या ड्रॉ करना रहेगा आपको, कौन सा डेटा आइटम किसने लॉक करके रखा हुआ है और कौन किसके ऊपर कौन किसको रिक्वेस्ट कर रहा है. रिक्वेस्ट जो कर रहा है वो वेटिंग में जाएगा, जो ऑलरेडी होल्ड करके रखा हुआ है उसके पास एरो जाएगा. इसका मीनिंग ही क्या हो गया कि यहाँ पर यदि मैं यहाँ पे बात करता हूं कि सपोज वी हैव ट्रांजैक्शन T1, अनदर ट्रांजैक्शन T2. ओके, T1 को ऐसा कोई डेटा आइटम चाहिए है कि जो ऑलरेडी किसने लॉक करके रखा हुआ है, इसने. ओके, T2 ने, और T2 को ऐसा डेटा आइटम चाहिए कि जो किसने लॉक करके रखा हुआ है, T1 ने. यानी क्या हो गया, यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या हो गई, वो साइकिल जो भी है वो क्या हो चुकी है, फॉर्म हो चुकी है. Such a situation is known as deadlock detection. So deadlock is detected, okay, and that can be done using wait for graph. So in examination there is question on wait for graph. Okay, normally there will be question on what, deadlock detection. So you need to focus on this topic. This is very very simple topic, but understanding should be very clear. Okay, so let's focus on the next part, is deadlock recovery. Deadlock recovery is saying that now once you identified using wait for graph कि डेडलॉक आ चुका है. ओके, आपको यदि ये नहीं समझा होगा तो मैं फिर से आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वेट फॉर ग्राफ किस तरीके से ड्रॉ करेंगे. ओके, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, वेयर सपोज देयर इज ट्रांजैक्शन T1 एंड ट्रांजैक्शन T2. ओके, ये दो ट्रांजैक्शंस यहाँ पर है. ओके, ये दो ट्रांजैक्शंस में हम लोगों ने रीड ए किया. ओके, रीड ए करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, उसको लॉक कर दिया. वी लॉक्ड ए. ओके, वी लॉक्ड ए and then we are reading this, then WA, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर रहे हैं. इसके बाद यहाँ पर रीड ए कर रहे हैं. रीड ए के पहले हम लोगों ने क्या किया, उसको लॉक किया. सॉरी, रीड बी कर रहे हैं, उसके पहले रीड उसको क्या किया, लॉक किया. सो रीड ए, रीड बी, देन राइट बी. यानी इस तरीके से ऑपरेशंस हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं. ये हम लोगों ने ऑलरेडी काफी बार देखा हुआ है. अब क्या होगा, यहाँ पर आपको ये समझ में आएगा कि T2, ओके, T2 में क्या होगा, T2 में भी हम लोगों को लॉक करना है. ओके, T2 ने क्या किया, यहाँ पर पहले ही, यानी पैरेलली चल रहा है, इसलिए यहाँ पर आपको समझना है. लॉक इसने क्या करके रखा है, लॉक X, इसने पहले B को लॉक कर दिया. ओके, उसके बाद जैसे इसने B को लॉक किया, उसके बाद यहाँ पे ऑपरेशन जो भी परफॉर्म हुआ है, दैट इज रेड ऑन B.
ओके, रीड ऑन बी जैसे ही हुआ उसके बाद राइट ऑन बी, राइट ऑन बी, दोनों साइमल्टेनियस इसलिए चल सकते हैं क्योंकि दोनों अलग अलग डेटा आइटम के ऊपर काम कर रहे हैं। ओके, उसके बाद यहां पर ये इंस्ट्रक्शन आया लॉक एक्स ए, यानी ये ए को क्या करना चाहता है, लॉक करना चाहता है। ओके, उसके बाद जैसे ये ए को लॉक करेगा, ओके, ये ए को जैसे ही लॉक करेगा यहाँ पे इसको क्या करना है, इसको मॉडिफिकेशंस करने हैं, यानी रीड करना है ए को रीड करेगा। ओके, उसके बाद ए पे मॉडिफिकेशन करके उसको राइट कर देगा, सो राइट ए विल बी देयर। फाइनली बोथ विल रिलीज द लॉक। Okay, finally both will release the lock, but this situation of releasing we'll see later on. Here you need to focus what is happening, that you need to focus properly. Okay, see that what is happening here, there is transaction. Okay, there is transaction T1, another transaction T2. Okay, okay, so I'm you can write down, you can see that T1 okay has locked this data item. किसको लॉक कर चुके हैं, इसको लॉक कर दिया, इसको ग्रांट मिल गया, इसको ग्रांट किया क्योंकि फर्स्ट टाइम somebody is demanding A, so it is granted. Simultaneously ये वाला इंस्ट्रक्शन हुआ, इसने भी इसको लॉक कर दिया, यानी B is locked. Okay, so I can write down like this. Okay, I can write down like this. This instruction here T1, okay, T1 has locked A and T2 has locked B. Okay, now रीड ऑपरेशन हो गया, यहाँ पे राइट ऑपरेशन हो गया, रीड ऑपरेशन हो गया, राइट ऑपरेशन हो गया। फिर से अब ये क्या कर रहा है, ये वाला सिचुएशन आपको देखना जरूरी है। ये वाला इंस्ट्रक्शन जैसे ही यहाँ पर आएगा, दिस इंस्ट्रक्शन लॉक एक्स बी, दिस विल नॉट बी ग्रांटेड बिकॉज इट इज ऑलरेडी लॉक्ड बाय दिस इंस्ट्रक्शन। यहां से ऑलरेडी लॉक किया है, इसको ग्रीन सिग्नल दिख रहा है ना, तो इसको लॉक ग्रांट नहीं होगा, यानी इसको नहीं मिलेगा, यानी क्या होगा, ये वेटिंग में चला जाएगा। ओके, इसका मतलब ही क्या है कि T1 इज वेटिंग फॉर T2. Okay, T1 is waiting for T2, so I can say that here it is waiting for T2. तो ये मैंने इसको wait for graph बना दिया। Okay, now next instruction, फिर ये वाला जो भी है ये आगे execute नहीं होगा, ये waiting में चला जाएगा, it will be in what, waiting. Okay, now further यहाँ पर आप देखिए what will happen, ये instruction execute हो गया, ये instruction यहाँ पे भी ये और ये execute हो गया, ये waiting में चला गया। अब ये वाला instruction के ऊपर focus कीजिए, you need to focus on this instruction, that is lock XA. Now this instruction is this item is already locked but it is not unlocked. It means that here it will not be allowed. ये इसको अलाउ नहीं किया जाएगा, यानी क्या होगा, T2 is also waiting for T1. तो यहाँ पर इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, इसका वेट फॉर ग्राफ जो भी है वो ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि T2 is also waiting for T1, ये भी इसके लिए वेट कर रहा है, दोनों एक दूसरे के लिए वेट कर रहे हैं। ये सिचुएशन जो भी है क्या आ गई, साइकिल। दिस साइकिल मीन्स दैट यहाँ पे आप लोग क्लियरली बोल सकते हैं कि ये सिनारियो क्या है, दिस इज नोन एज डेडलॉक। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेडलॉक। सो दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड। सो डियर फ्रेंड्स, डेडलॉक डिटेक्शन इज पॉसिबल यूजिंग वेट फॉर ग्राफ। तो इस तरीके से वेट फॉर ग्राफ हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। तो आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ वेट फॉर ग्राफ। ओके, सो वंस वी अंडरस्टूड दैट we have found this, okay, we have found this, somebody has to take care of what, recovery. So once deadlock is there, we need to recover from the deadlock. आ गया है सिर्फ इतना बोल के नहीं चलेगा, deadlock आया है तो अब उसको क्या करना पड़ेगा, recover करना पड़ेगा। and for that there is topic like deadlock recovery. So let's focus on deadlock recovery. When deadlock is detected, once it is find that the deadlock is detected, okay, some transactions will have to roll back, made a victim to break deadlock. डेडलॉक को क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। और तोड़ने के लिए जरूरी क्या है, किसी एक ट्रांजैक्शन को रोल बैक करवाना पड़ेगा, उसे बाहर निकालना पड़ेगा। ऐसा कौन सा ट्रांजैक्शन चूज करना चाहिए, अब ये टैलेंट आया है। यहाँ पे चैलेंज क्या है, विच ट्रांजैक्शन वी हैव टू चूज एज अ विक्टिम, जिसको हम लोग क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। तो ऐसा ट्रांजैक्शन चूज करना चाहिए जिससे कम से कम क्या होंगे, रोल बैक होंगे। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ डिसीजन। ओके, सो सिलेक्ट दैट ट्रांजैक्शन एज विक्टिम दैट will incur minimum cost. Cost means what, lower lesser rollback. हर एक रोलबैक का एक कॉस्ट होगा, ओके, दैट वी नीड टू कंप्यूट। वो कंप्यूट करने के बाद जब पता चलेगा कि कौन सा लेसर है, जो लेसर वाला होगा जिसमें कम लॉस होगा, वो वाला हम लोगों को क्या करना रहेगा, ट्रांजैक्शन एज अ विक्टिम कंसीडर करना है। ओके, सो दैट वी नीड टू कंसीडर हियर। सो हियर यू नीड टू अंडरस्टैंड, ट्रांजैक्शन जो विक्टिम आप लोग कंसीडर करने वाले हैं वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और वहां पर क्या होगा, एक चैलेंज है जहां पे लोगों को बहुत काम करने का स्कोप है। नेक्स्ट पार्ट, रोल बैक डिटरमाइंस हाउ फार रोल बैक
the transactions. So you need to understand what we need to do once we have got this is what one of the victim, एक आध ट्रांजेक्शन आपको पता चला कि ये विक्टिम है, उसको रोल बैक करना है, यानी उसका कार हम लोग रिवर्स देने के लिए बोलेंगे और बाकी ट्रैफिक हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा. सो दैट इज रोल बैक. नाउ टोटल रोल बैक मींस व्हाट, अबॉर्ट द ट्रांजेक्शंस एंड देन रिस्टार्ट इट. यानी क्या, टोटल रोल बैक का मीनिंग क्या है, पूरे ट्रांजेक्शन को बाहर निकाल दो. और पार्शियल रोल बैक यानी क्या, सपोज ट्रांजेक्शन T1 होल्डेड अ डेटा आइटम A, उसके पहले उसके कुछ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हुए हैं लेकिन उसने A को होल्ड करके रखा है, तो वहां पे उसको सिंपली जिस जहां पे उसने लॉक किया है ना उसके पहले तक आपको रोल बैक करना है. यानी ऑटोमेटिकली A क्या होगा, अनलॉक होगा. A जैसे ही अनलॉक होगा दूसरे ट्रांजेक्शन को A मिल जाएगा और उसका आगे चला जाएगा. तो इसको पार्ट और फुल रोल बैक बोला जाता है. टोटल रोल बैक मींस व्हाट, एंटायर ट्रांजेक्शन इज रोल बैक. एंड पार्शियल रोल बैक मींस व्हाट, only particular part of transaction is rollback, जहां पे minimum cost आप लोगों को लगेगा. Okay, but there will be extra overheads. Okay, now starvation. If same transaction is always chosen as a victim, there may be possibility. हमेशा आप क्या करोगे, T12 को लोगे. Okay, हमेशा T12 को victim करोगे, उसको बाहर निकालोगे, बाकी ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट करोगे, फिर से T12 पिक्चर में आएगा, पता चला फिर से साइकिल आ रही है, फिर से रोल बैक आ रही है, फिर से T12 को निकालोगे, बाहर कर दोगे. There may be possibility of starvation. Such a situation is known as starvation. So choosing victim itself is very challenging part. Okay, so include the number of rollbacks in the cost factor to avoid starvation. तो starvation को यदि आप लोग फोकस करोगे, प्रॉपर प्रोग्रामिंग किया जाएगा, प्रॉपर डिजाइनिंग किया जाएगा, तो even we will recover from deadlock and it will give us assurance that no starvation will happen. So always remember, while recovering deadlock there may be possibility of starvation. So we should be very careful while writing our algorithms. Now the next part is multiple granularity. So this topic, okay, is again very important. Focus on this topic and then I'll stop. So multiple granularity shows that here you can see this animation. This animation is telling you that here it is ultimately tree. Okay, so it is represented, multiple granularity is normally represented using graphics, and that graphical representation is tree. So which data structure is needed, here we must have knowledge of tree. अभी हम लोगों ने ग्राफ का देखा, अब हम लोग कहां पर फोकस कर रहे हैं, ट्री के ऊपर फोकस कर रहे हैं. अब ट्री आया यानी नो साइकिल मींस नो डेडलॉक. दैट्स द ब्यूटी ऑफ ट्री. ट्री का क्या होता है, ट्री यानी क्या, उसमें साइकिल कभी आएगा ही नहीं. ओके, ट्री का यही ब्यूटी है, जब साइकिल ही नहीं आएगा तो डेडलॉक फ्री रहेगा. ये गारंटी, ये एश्योरेंस आप लोगों को दे सकता है. ओके, सो लेट्स फोकस ऑन व्हाट, मल्टीपल ग्रैन्युलैरिटी. ओके, सो अलो डेटा आइटम्स to be set of various sizes and define hierarchy of data granularity. यानी क्या, कौन किसके अंडर आएगा, कौन सा ट्रांजेक्शन किसके अंडर आएगा, ये आप लोगों को वहां पर दिखाया जाएगा. ओके, तो जिस तरीके से हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर रहे थे, सेम वे वी कैन एबल टू रिप्रेजेंट इट थ्रू ट्री. Okay, let's focus on the details of this multiple granularity. Multiple granularity says that when a transaction locks a node in tree explicitly, it is implicitly locks all the nodes descendant in the same mode. यानी क्या, उसके नीचे वाले, आपने यदि कोई पर्टिकुलर ट्री के नोड को क्या किया, लॉक किया, उसके नीचे जितने भी डेटा आइटम्स है ऑटोमेटिकली उसको भी क्या कर देगा, वो लॉक कर देगा. सो दैट इज वन ऑफ द पार्ट. Okay, so granularity of locking you need to understand. There are two types of granularity: fine granularity and coarse granularity. Fine granularity is always from what, lower in a tree. ये कौन से साइड पे रहेगा, lower in the tree. Okay, and coarse granularity means what, it is at higher in a tree. And here you need to understand high concurrency and high locking overhead. यहां पर इफ यू यूज फाइन ग्रैन्युलैरिटी, आपको कॉन्करेंसी यानी क्या, मल्टीपल पैरेलल ट्रांजैक्शंस आप काफी अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाओगे, ज्यादा से ज्यादा एग्जीक्यूशन कर पाओगे, हायर थ्रूपुट आप लोगों को मिल पाएगा, बट विद हाई लॉकिंग ओवरहेड. वी हैव टू टेक केयर ऑफ व्हाट, proper locking overhead. So that is one of the challenge. In case of coarse granularity, you will understand that low कॉन्करेंसी, यहाँ पे आपको लोअर कॉन्करेंसी किया जाएगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, हायर लेवल को क्या करते जाएगा, लॉक करते जाएगा. तो नेचुरली क्या हो जाएगा, मेजॉरिटी ऑफ द ट्री विल बी लॉक्ड. मेजॉरिटी ऑफ द ट्री विल बी लॉक्ड यानी क्या, पैरेलल एग्जीक्यूशन क्या हो जाएगा, वहां पे रुक जाएगा. सो दिस इज नोन एज व्हाट, this is known as coarse granularity. Okay, so naturally low concurrency and low locking overhead. Okay, let's look at an example so that it will give you entire part. There is a root node known as database. This DB stands for what, database. So we have one root node
and in that there are several area nodes. Okay, that is A1 and A2. We have taken two as an example. Okay, so in database there are two nodes which are actually child to DP, A1 and A2. Okay, here now you will understand why it is known as parallel execution. Suppose you are at DB, okay, you have to choose the path. Either you have to go there, or there may be possibility this is one of the subtree and this is another subtree can execute parallelly, है ना. दो ऑपरेशंस पैरेलली हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं. आप लोगों को टूर्नामेंट ट्री याद आएगा, अभी फिलहाल आईपीएल चल रहा है ना, तो आप लोगों को समझ में आएगा. यदि मैं इस तरीके से ट्री बनाते जाता हूँ, ओके, इस तरीके से ट्री बनाते जाता हूँ, तो आपको समझ में आएगा कि ये वाला पार्ट उसका उसका एग्जीक्यूट होते रहेगा, ये वाला पार्ट उसका एग्जीक्यूट होते रहेगा. इनमें से जो भी विनर रहेगा वो A1, जो भी विनर है उसका नाम A1, यहां से जो विनर रहेगा दैट इज A2, ये सेमीफाइनल, और इनका फाइनल यहां पर होगा. इनमें से जो विनर रहेगा दैट इज नोन एज डेटाबेस. तो टूर्नामेंट ट्री यदि आप लोगों को याद होगा डेटा स्ट्रक्चर में, जहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जब भी हम लोग ट्री में डिवाइड करते हैं तो यहाँ पैरेलल एग्जीक्यूशन जो भी वो चलता है. सो लेट्स अज्यूम दैट दिस पर्टिकुलर टीम हैज कंप्लीटेड देयर मैच. ओके, 3-3 घंटा हर ट्री को दिया हुआ है. ये ट्री ने अपना मैच 3 घंटे के पहले खत्म कर दिया, मान लीजिए 1 ही घंटे में खत्म कर दिया, क्योंकि क्रिकेट है. क्रिकेट में कोई गारंटी नहीं है, कोई कम इसमें आउट हो जाएगा, कोई ज्यादा इसमें आउट होगा. कुछ पर्टिकुलर जो मैच है वो 3 आवर्स के लिए चलेगा, कुछ मैचेस जो भी वो 1-1.5 घंटे में क्या हो सकती है, खत्म हो सकती है. तो ये वाला मैच जो भी है ये क्या हो गया, जल्दी खत्म हो गया. बट ये वाला मैच अपना पूरा 3 घंटा जो भी वो ले चुका है, फिर भी इसको वेट करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि उसको जिसके साथ में आगे मैच खेलना है वो वाला टीम अभी तक तय हुआ नहीं है. सो दिस इज नोन एज व्हाट दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड. ओके, तो ये आपको समझना है. तो यहां पर क्या हो गया, A1 यानी एरिया के अंदर क्या दिए, फाइल्स. ओके, तो यहाँ पे FA आया, यहाँ पे क्या आ गया, FB. नाउ अगेन विद दिस फर्दर डिवीजन ऑफ रिकॉर्ड्स. ओके, इस फाइल के अंदर कुछ रिकॉर्ड्स है RA1 से लेके RAN तक. यहां पर भी RB1 से लेके RBK तक, यानी मल्टीपल रिकॉर्ड्स यहां पर है. ओके, अब क्या होगा ये आपको समझना है. जब आप टॉप टू बॉटम आते हैं, द लेवल स्टार्टिंग फ्रॉम द कोर्सेस्ट, दैट इज टॉप लेवल, यानी आपको ये समझ में आना चाहिए टॉप टू बॉटम यानी कोर्स, एंड बॉटम टू टॉप यानी क्या, फाइन. फाइन क्यों बोला जाता है उसको, आप समझिए कि रियलिटी डेटा कहां पर है, नीचे है. एक्चुअल जो टर्मिनल नोड्स है वहां पर एक्चुअली क्या है, एक्चुअल एग्जीक्यूशन होने वाला है. सो दैट इज फाइन. टॉप बॉटम अप approach is fine granularity and is known as coarsest. Okay, so this you need to understand from this. Okay, तो यहाँ पर आपको ये मेरा एक्चुअली समझाने का आज मेन एम था. इंटेंशन लॉक मोड वाला जो भी टॉपिक है दैट आई विल कवर इनटू द नेक्स्ट सेशन. ओके, इफ यू हैव डाउट यू कैन आस्क. मीनवाइल मैं आप सभी लोगों को अटेंडेंस जो भी वो शेयर कर रहा हूँ, बट बिफोर अटेंडेंस आई जस्ट वांटेड टू मेंशन वन पार्ट to you all. Okay, and please be aware of this kind of activities that there are certain students. देखिए ये कुछ स्टूडेंट्स है. ओके, यहाँ पर आप यदि देखोगे उनके नाम भी आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं. आप में से भी शायद उनमें से कोई होगा आज प्रेजेंट. तो आप लोग एक बात समझ लीजिए, मैं टाइमिंग ऑब्जर्व करने वाला इंसान हूँ. यहाँ पर आप टाइमिंग यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रहा है. ओके, रात को 8 बजे नीलेश ने क्या किया, अटेंडेंस लगाया है. कोई बंदों ने 1:29 पे लगाया, किसी ने 1:24 पे लगाया, किसी ने 13:27 पे लगाया. और आप समझिए मेरा लेक्चर 12:30 से लेके कितने बजे तक था, 13:10 तक ही था. ओके, तो मैं ये कैसे अटेंडेंस को कंसीडर करूं. सो आई कैन नॉट कंसीडर दिस टाइप ऑफ अटेंडेंस. और यहाँ पर मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड इनको क्या करूंगा, एब्सेंट लगाने वाला हूं. तो जो भी स्टूडेंट्स को यदि गूगल फॉर्म दिया जाता है, आपको तब यदि कुछ दिक्कत आ रही है, आपने इमीडिएटली मुझे व्हाट्सएप जो भी वो डालना चाहिए. वो यदि आप नहीं डालते हैं तो मैं आपका अटेंडेंस यहाँ पर कंसीडर नहीं करूंगा, क्योंकि अटेंडेंस के लिए एंड है. यानी क्या, आपका टेक्स्ट बॉक्स में जो भी है यूट्यूब का टेक्स्ट बॉक्स रहे, चैट विंडो रहे, या आपका जूम का चैट विंडो रहे, वहां पर आपका नाम आना जरूरी है. पॉइंट नंबर 1. सेकेंड, जो भी गूगल फॉर्म में आप लोगों को देता हूं अटेंडेंस के लिए, वहां पे भी आपका नाम आना चाहिए. और कभी कभी मैं आप लोगों का क्विज लेता हूं, वहां पे भी आपका नाम आना चाहिए. ये तीनों जगह पे यदि आपका नाम आता है, इसका मतलब आपने मेरा लेक्चर अच्छे से पूरी तरीके से अटेंड किया हुआ है. इन बिटवीन यदि किसी का इंटरनेट का कुछ इश्यू होता है, डिस्कनेक्शन होता है, यू नीड टू इन्फॉर्म टू मी, अदरवाइज आई कैन नॉट कंसिडर योर अटेंडेंस. कल थर्ड ईयर IT में से कोई एक स्टूडेंट ने मुझे इन्फॉर्म किया था कि सर गूगल फॉर्म, इमीडिएटली मुझे इन्फॉर्म किया था कि सर गूगल फॉर्म मुझे एक्सेस नहीं हो रहा है, मेरे यहाँ पर इंटरनेट का इशू आ रहा है. उन्होंने मुझे जैसे ही इन्फॉर्म किया, उनका नाम जैसे ही मेरे पास आया, मैंने इमीडिएटली उनका अटेंडेंस खुद होकर लगा दिया. So this way I am doing. So my dear students, I cannot entertain such type of attendance unless it is told to me. So I am simply removing it. ये मैं remove कर रहा हूँ. आपको attendance का link मैं आपको यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, अभी share कर रहा हूँ. Okay, आपका attendance जो भी आपको mark करना होगा.
immediately आप लोग mark कीजिए, क्योंकि I am observing what the timings. Okay, and timings really matter. Time matters for me. So mark your attendance now. I have already shared this on chat window. Now I am sharing the same with the students, those who are on YouTube. Okay, वहां पर भी मैं इसको share कर रहा हूँ. Okay, I have shared at both the end. Put your attendance properly. Okay, and if you have doubt, you can unmute yourself and you can ask the doubt. If you have doubt, you can always ask. So, दोस्तों जब लगा ही रहे हैं तो मैं आपको कुछ बात बता दूं. आप सभी लोगों को शायद जो भी एक्सरसाइज मैंने आप लोगों को दी हुई है, होप यू रिमेंबर. Okay, and hope you are doing it. Okay, hardly it takes 7 minutes. Prevention is always better than what cure. So my dear students, try to follow. Okay, आपके पूरे जो भी बिजी शेड्यूल में से 7 मिनट्स आप लोग निकालिए, एक्सरसाइज करके देखिए, आप भी कीजिए, आपके फ्रेंड्स को भी बोलिए, आपके फैमिली को भी बताइए. आप लोग इसको डेफिनेटली कॉन्कर कर पाओगे कोविड-19 को. ओके, सो दिस इज वन पार्ट. अनदर पार्ट मैं आप सभी लोगों को ये बता दूं कि आप सभी लोगों को ये पता होगा कि देयर इज व्हाट, यहाँ पे फिलहाल क्या चल रहा है, नवरात्रि चल रही है. ओके, और नवरात्रि के जो भी 9 डेज है, आप लोग कम से कम घर बैठे जो भी है वो सेलिब्रेट कर सकते हैं. इज इट पॉसिबल टू अरेंज दी गरबा? ओके, गरबा बोलिए, दांडिया बोलिए, जूम के थ्रू हम लोग कर सकते हैं क्या? सोचिए इसके ऊपर किस तरीके से कर सकते हैं. एटलीस्ट लास्ट डे के ऊपर तो भी आप लोगों में से कोई तो भी आगे आके कुछ एक्टिविटी जो भी हो आप लोग प्लान कर सकते हैं. एंड यू कैन प्लान व्हाट गरबा. एटलीस्ट ड्रेस तो आप लोग पहन सकते हैं. आज ग्रीन वाला ड्रेस, देखो मैं ग्रीन वाला शर्ट पहन के आया हूँ. इतना तो आप पक्का कर ही सकते हैं. बॉयज रहे या गर्ल्स रहे, आप घर पे रहे या बाहर रहे, आप लोग डेफिनेटली ये कर सकते हैं. एंड ट्राई टू एंजॉय अपना लाइफ. हमें ही एंजॉय करने की आदत रखनी चाहिए. फिर सिचुएशन भले ही कुछ भी रहे, हर सिचुएशन में एंजॉयमेंट आप लोग ढूंढने की कोशिश कीजिए. डेफिनेटली आपका लाइफ काफी सफल रहेगा. ओके, इफ यू हैव डाउट यू कैन प्लीज आस्क. Sir, explain last topic, sir. Last topic. You mean to say? Yes, sir. Or Multiple recovery or graduation. Granularity. Okay. Multiple graduality. Okay. I'm explaining that. For multiple granularity, it is very important that you need to understand the logic of granularity. How locking can be done? So locking can be done using either fine granularity or coarse granularity. That you need to understand. What is fine? So I have already told you, it is ultimately approach like bottom up, and this is the approach like top down. That you need to understand. Okay, so naturally top down और bottom up यानी क्या? यहाँ पर मीनिंग ये है किस तरीके से लॉक हम लोग करते जाएंगे आपके जो भी ट्रांजेक्शंस है उसको. ओके, सॉरी, डेटा आइटम्स जो भी है उसको किस तरीके से लॉक किया जाएगा. तो यहाँ पर लॉक कैसे होगा? यहाँ पर लॉक होगा इस इन केस ऑफ फाइन ग्रैन्युलरिटी बॉटम टू टॉप. तो नेचुरली आप बॉटम टू टॉप करोगे यानी क्या होगा? मान लीजिए आपको ये वाला डेटा आइटम चाहिए है. ओके, और ये वाला अपना ट्री यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ पर ट्री बना हुआ है, ऐसे आप समझ के चलिए. ओके, और आपको ये वाला डेटा आइटम चाहिए. कौन सा? ये वाला. जब ये वाला डेटा आइटम आप लोगों को चाहिए रहेगा, आपको सिंपली इन दोनों को ही सिंपली क्या करना है? लॉक करना है. इन दोनों को ही लॉक करना है. तो ये वाला बचा रहेगा. ये लॉक नहीं है यानी क्या? इसमें जो भी अलग जो ट्री बनी हुई है ये इनका एग्जीक्यूशन करते रहेगी क्योंकि इट इज नॉट लॉक. ये वाला लॉक नहीं है. ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे कम से कम क्या होगी? कम से कम यहाँ पर क्या होगा? डेटा आइटम को लॉक किया जाएगा. ओके, इसलिए हाई कॉन्करेंसी आपका रहेगा. सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ फाइन ग्रैन्युलरिटी. कोर्स ग्रैन्युलरिटी में क्या होगा? टॉप से ही आएगा. यानी क्या? मान लीजिए ये वाला डेटा, ये वाला ट्री मैं यहाँ पे बना रहा हूँ. ओके, ये ट्री जो भी मैंने बनाया है, यहाँ पर मान लीजिए हम लोग को ये वाला डेटा आइटम चाहिए, इसको हम लोगों को लॉक करना है. तो इसको कहां से लॉक किया जाएगा? इसको लॉक किया जाएगा, फिर इसको लॉक किया जाएगा, फिर इसको लॉक किया जाएगा. जब ऐसे इन सबको यदि यहाँ पे लॉक किया गया तो आप समझ लीजिए कि ऑटोमेटिकली यहाँ पर भी कुछ पैरेलल एग्जीक्यूशन होगा क्या? नहीं होगा. सो नेचुरली इट विल गिव यू लो कॉन्करेंसी. दैट्स द ब्यूटी ऑफ fine granularity and coarse granularity. I hope it is clear, Rahul. Yes, sir. Yeah, thanks. I'm happy that you all are, some of you are asking doubts. If you have doubts, you can please always raise your hand. You can always ask the doubts. Any other doubt? Okay, Shubh Navratri to you all.
Jai Mata Di. Thank you. Bye-bye.